Um, we are waiting for others to join. Just hold on. Okay. Good morning, everyone.
Yeah, good morning, everyone. Would request you to kindly stay online. We are waiting for others to join. So you will not hear any volume as of now. But after 2 minutes, we will start the session. So just hold the line, be there. Hi, good morning, everyone. So we'll start the session. So I'll take you through the policy and the product guidelines which are there, and any questions you have, you can raise on the chat box which is there available. So I'll try to answer your questions there, but it will be towards the end of this session. So let's start with the variants which we are selling right now. Hope I'm audible. Somebody can type in the chat box and tell. Yeah, yeah, I hope you can hear now. Mona, if you can confirm, Gaurav Bhardwaj, if you can confirm. Yeah, fine. So let's go ahead with this morning session on HSBC. So if you look at the variants which we are promoting currently is HSBC Visa Platinum Credit Card, which is the entry level card. The second card is the HSBC Cashback Credit Card, which is the premium segment card. So these two variants are available to be sold. I'll take you through the policy guidelines. So if you look at the policy guidelines, so there are PIN codes which are eligible, which will be in the platform HSBC while punching in the applications. You can look at those PIN codes and it will automatically pop up there. These are the PIN codes which are eligible. And if I talk about credit score, it is approximately 710. And what segment of customers we can source is salaried and basically card for card customer. Card for card customers would have to be also be salaried base, salaried customer. Then only you can go ahead and source the application. So salary is what the first criteria is to be sourced. If he is not salaried or she is not salaried, then you cannot source the application. So please keep that in mind. Uh, if I talk about criteria of age bracket, income bracket, and documents what are required, you can look on the screen. Age bracket is 18 to 65 years. And if I talk about income bracket, so it is monthly net income should be 33,000. It is mandatory. Even if it is for C4C, if you are putting in card for card statement, then obviously the bank is looking at a salaried segment in that. You cannot put in C4C a uh, self-employed customer. Okay.
So documents, what is currently required is latest 2 months month salary slip and bank statement along with that, where the salary is getting credited. C4C latest statement is required in case of C4C, card for card if you are applying. But with C4C, we recommend that you put in bank statement where the salary is getting credited. So there is a query which comes in from the ground. It states that if I am putting in C4C latest card statement and the salary is less than 33,000, can we source? So the answer is no. The bank looks at the first criteria for bank is to get to be having a net annual income of 33,000. That is mandatory from the bank's perspective. So I'll talk about C4C, what is C4C policy says, and so somebody saying blurred screen, so you need to come, Garv, you need to come in a proper connectivity. Okay, so you'll be able to see the screen. So C4C segment is basically a card vintage should be more than a year. Card limit for salary segment should be 70,000 minimum. And documents required is the bank credit card statement. Along with, there are four things which should be visible on that whatever the card copy you have to also insert in the image upload. So the name has to be visible, expiry date has to be visible, complete card number has to be visible, and which bank has issued the card has to be visible while you are taking a photograph of the card along with the statement of the credit card. Few banks are only allowed, all banks are not allowed. So Amex, Standard Chartered, Citibank, IDFC, Axis, HDFC, and Kotak are allowed in the card for card program. Again, repeating, in card for card program, when you are putting in the statement and the card copy, please put the bank statement as well so that the salary credit can be seen. Otherwise, bank will ask you to give the salary slip. Salary slip, not bank statement. It comes in curing basically. So let's go to the Visa Platinum credit card features. What is the features? It's an entry level card, and first it is like lifetime free card. There is no fees to it. There is no renewal fees to it. What benefit? How can we sell this card more? So it first of all, it is lifetime free. It automatically sells. The second thing, what you need to convey to the customer, it is mandatory that you are conveying this feature to them so that they can avail this benefit. So after receiving the card, if he is doing 5,000 rupees purchase in first 30 days, he gets an Amazon voucher of rupees 500. So with a lifetime free card, you are getting an Amazon voucher, but this needs to be clearly communicated to the customer that in 30 days you have to spend 5,000 rupees so that you get a 500 rupees Amazon voucher. Once he activates the card, the bank will send a SMS to the customer and he can redeem those vouchers on Amazon. So that's a selling point. Apart from that, there are reward points which are there in this card, which keeps on accumulating. Unique selling point, again, if you look at the slide, Book My Show offer is there on the weekends up to 250, up to 250 is the capping of the buy one get one movie tickets on Saturdays. In this card, there is no lounge access. Please don't commit any kind of lounge access in this card. It's a lifetime free card, so there's no lounge access. There is a discount which keeps on going on all the cards. Like you can see up to 15% instant discount on selected products in lifestyle and luxury categories, Tata Click. So this is an ongoing feature on all the cards of HSBC. And there is a fuel surcharge waived off up to 3,000 annual savings is on the fuel surcharge waived off. So this is basic card, what we are currently selling. I would recommend you guys to sell this card. Apart from this, we have another variant, which is first year where you have to pay 999 rupees fees. This is HSBC cashback credit card. This is a upper variant card, better than the lifetime free card. The features basically is also enhanced in this. And if you look at the selling features of this card, so while you are selling the card, you can always tell the customer that when you receive the card within
first 30 days after receiving, you have to spend 10,000 rupees on this card so that you can avail an Amazon voucher of 1,000 rupees. So ideally, if you look at this card, it is first year 99 rupees. What customer is paying is getting he is getting 1,000 rupees voucher from Amazon. So it ideally customer is in a win-win situation. He has not paid anything to the he has paid 99, but again he has got an Amazon voucher of 1,000. So this is the selling point. Apart from that, he is getting 1.5 unlimited cashback on all spends on other spends basically. So there will be exclusion to this, like you insurance, like school fees. All these things will not be giving you cashback, like Paytm wallet uploads. So any kind of wallet uploads, these will not be there in the cashback. But again, whatever retail spends he is doing on this card, 1.5% cashback comes in. Book My Show offer is there. There is a domestic lounge access in this, which is one per quarter, which customer can avail. Okay. Okay. Somebody wants to. Okay. Hindi. Okay. So I'll do one thing. I'll speak in Hindi also. I'll speak in English also. So let me get back to you then on the first card. I think so many people would not have understand. ठीक है. So Amazon का इसमें वाउचर मिलता है. पहले वाली कार्ड की बात कर रहा हूँ, वीजा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड का. इसमें Amazon का वाउचर मिलेगा आपको 500 रुपए का, अगर 5,000 स्पेंड किया 30 डेज में. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 5,000 स्पेंड करेंगे 30 डेज में, तभी 500 का वाउचर मिलेगा. लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और इसमें बुक माई शो का भी ऑफर है. इसमें लाउंज एक्सेस नहीं है. ठीक है. इंग्लिश में मैं समझा चुका था, अब हिंदी में समझा रहा हूँ. सेकंड, जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 999 की फीस होती है. तो 99 की फीस जो लगती है उसके अगेंस्ट में आपको अमेजन वाउचर मिल सकता है, अगर 30 डेज में वो 10,000 रुपए स्पेंड करता है. तो प्लीज कम्युनिकेट करिएगा कस्टमर को. यू हैव टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर दैट इन 30 days you have to spend 10,000 rupees after receiving the card so that you can avail 1,000 rupees voucher. 1,000 रुपए का वाउचर तभी अवेल कर सकता है जब वो 10,000 रुपए स्पेंड करता है. 1.5 1.5% अनलिमिटेड कैशबैक है इस कार्ड के ऊपर. बुक माई शो का ऑफर है, विच इज बोगो ऑफर वी कॉल इट, ऑन द मूवी टिकट्स. डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस इज देयर. 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस इसके अंदर मिलता है, पर एक क्वार्टर में एक ही लाउंज एक्सेस मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज 30% instant discount on 600 on Easy Diner. Then you have offer on Blinkit. 5% discount is there on spending 1,000 on Amazon. Complimentary 3 months Farm Easy Plus membership. These are ongoing features on the HSBC cashback credit card. So it's a better card than a lifetime free card. So you can sell this card who customers who are traveling, who wants cashback and who has spends high, जिनका स्पेंड्स हाई है उनको आप कर सकते हैं. जो ट्रैवल करते हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं. जो लाउंज एक्सेस करना चाहते हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं ये कार्ड. सो ये दो वेरिएंट्स हैं. इन दो वेरिएंट्स के बाद ये कुछ ऑनगोइंग ऑफर्स हैं. यू कैन सी एज आई वाज सेइंग, इजी डाइनर पे ऑफर है, बुक माई शो, पीवीआर. इफ यू आर लाइक फूड एंड बीवरेज, आप पीवीआर से खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है. क्रोमा पे ऑफर चल रहा है, विजय सेल्स पे ऑफर है, मेक माई ट्रिप यू हैव ऑफर, यात्रा पर ऑफर है. सो ये सब ऑफर्स कस्टमर्स को कार्ड मिलने के बाद बैंक भी ट्रिगर करता रहता है, बैंक भेजता रहता है. ठीक है. आई बिलीव एनी क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन पुट इन चैट बॉक्स. मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ. सो अगर कोई क्वेश्चन है तो हिंदी में भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव people joined from South India also, so they want English and people from North wants Hindi. तो दोनों में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूंगा. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालें. चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस. आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है. सो एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं कि कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस दीज एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट स्क्रीन विच कम्स, पहला स्क्रीन जो आएगा आपको ऐसा दिखता है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना होता है. यू हैव टू पुट इन द मोबाइल नंबर्स एंड आफ्टर यू पुट इन द मोबाइल नंबर आपको एग्री पे बटन पे क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा. इस सबमिट करेंगे तो आप ये ऐसे स्क्रीन पे आ जाएंगे. सो HSBC का ये स्क्रीन है. HSBC के स्क्रीन पे दिस स्क्रीन is it's landed on HSBC page wherein you have to fill in 3 details. आपको 3 details भरने पड़ेंगे: full name, mobile number and email address. So all 3 details you have to fill. And एक
आप लोगों को एक मतलब जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों को बहुत ध्यान से भरना है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरीली हैज टू बी फिल्ड प्रॉपरली। इफ एनी मिस्टेक हैपन्स, अगर कोई गलती हो गई तो फिर वो एडिटेबल नहीं है, और ईमेल आईडीज पे ही सारा कम्युनिकेशन बैंक करता है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ensure the email ID filled by the customer has to be in proper, and please check twice before because once the curing comes, suppose the file is in rework, then the email IDs are very crucial. You will be sending to the bank the salary slips and all. So if email ID is wrong, then bank doesn't consider. So please ensure that email ID is properly filled. And after you fill this, then generate OTP is there. Uh, somebody is asking, sir, हमको पता है कैसे लगेगा कि कोड अवेलेबल है, किस पिन कोड अवेलेबल है? ओके, पिन कोड का मैं आंसर करूंगा आप लोगों को। जस्ट लेट मी शो यू द स्क्रीन्स पे 1 to 1 मैं आपको ले जा रहा हूँ, वहां पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रीन ऐसा है जिसमें आपको ओटीपी डालना है। प्लीज इंश्योर ईमेल आईडी इज राइट। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज वो अगर गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम आती है आगे। तो जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में ओटीपी हम पंच करते हैं। ओटीपी पंच करने के बाद आफ्टर वी पंच द ओटीपी by filling the name, mobile number, email address, and OTP, it will take you to uh, basically a screen where you can see there is a eKYC type. So please ensure आप eKYC type yes select करें। अगर no select करेंगे तो मैं बताऊंगा प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, द प्रोसेस गेट्स लेंदियर in case you don't select eKYC type as yes. eKYC type is nothing, it's just a आधार authentication which happens on the portal. आधार ऑथेंटिकेट होता है eKYC में। तो अगर yes करेंगे तो easy प्रोसेस है, आपका एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होता है, इट इज फास्टर। एंड देन यू हैव टू टिक ऑन माय आई एम सैलरीड इंडिविजुअल। आफ्टर यू टिक इन ऑन दिस, after doing eKYC yes in this drop down box, salaried individual, then you generate an OTP. Then this screen comes in wherein you have to punch in your PAN number, and uh, you have to punch in your Aadhaar number, and eKYC mode. You have to select as SMS OTP. You can see the blue dot here, and you have to confirm in this checkbox. आप ये जब कर लेंगे, आप जब अपना आधार नंबर डालेंगे, एसएमएस ओटीपी टिक करेंगे, नीचे अग्रीमेंट पे टिक करेंगे, तो आपको एक आधार से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर ही ओटीपी आएगा। तो प्लीज इंश्योर करें कि आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो और वहां पर ओटीपी आ जाए। तब तब आप ओटीपी यहाँ डालेंगे। एक नीचे इसके बाद एक बॉक्स खुलेगा जहां पर एज पर आईडी लिखा है, यहाँ पर नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा जहां पे ओटीपी डाल के इसको वैलिडेट कर देंगे, तो कस्टमर का ई केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। कस्टमर विल बी एबल टू कंप्लीट हिज ई केवाईसी बाय डूइंग एन आधार ऑथेंटिकेशन। So after this, you will move to next screen where personal details screen is there, and then you have to validate your PAN. And once you validate your PAN, you will have to fill in certain details like residential status, marital status, personal details, gender, all those things you have to fill. आपको ये सारे fields fill करने पड़ेंगे। तो जो भी बैंक मांग रहा है, जो भी बैंक के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो सारे fields आप fill करें। एंड फिल करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहां एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आता है। सो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगेन देर इज वन सजेशन एंड यू शुड फॉलो दैट सजेशन। कंपनी नेम इज देयर, सो कंपनी नेम हैज टू बी फिल्ड प्रॉपरली एज पर सैलरी स्लिप। प्लीज लुक इनटू द सैलरी स्लिप कि क्या कंपनी का नाम आ रहा है सैलरी स्लिप पे। जो नाम है एग्जैक्टली नाम सेम भरिए, नहीं तो फिर ये रीवर्क में चला जाता है एप्लीकेशन, क्योरिंग में चला जाता है, इसको कहते हैं एचएसबीसी के टर्म्स में क्योरिंग कहते हैं। तो क्योरिंग में चला जाएगा, इसलिए नाम कंपनी का भरना इंपॉर्टेंट है जो सैलरी स्लिप पे हो, या फिर बैंक में जिससे क्रेडिट हो रहा हो, अगर आप वो भी भरेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा एप्लीकेशन। अगर कुछ भी नाम इधर उधर हुआ तो दैट विल फॉल इन टू द क्योरिंग टाइप। सो प्लीज इंश्योर company name is you are filling is proper. So fill all these details, and address has to be proper, otherwise um, delivery will not happen. So please ensure you are properly filling in the address as well. आप address पूरा ठीक से भरिए, designations and everything has to be filled in properly. If you fill properly, then the application will flow in proper manner to the bank and approval chances will be higher. तो approval rates higher होते हैं अगर आपने सब कुछ ठीक से भरा है। Then you go to the continue next page. This is the third employment details. As you can see on the top,
basic information, personal details, employment details. Then we come to review screen. So in this screen it is basically what you have filled. आपने जो पीछे भरा है वो सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं. This is displayed here. So please ensure everything is properly filled, and if something missing is there, please go to the back uh, from here and edit it. From after this screen you will not be able to go back. So review and then you press continue. After you continue, then the rule engine of the bank will run here. Rule engine of the bank means bank will run a scoring here, and once the scoring is run, score जब run हो जाता है बैंक का, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरा एप्लीकेशन अप्रूव्ड है या डिक्लाइंड है. इसके बाद आपको पता चल जाता है. तो यहाँ पर एक स्क्रीन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ मैसेज विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम HSBC. और अगर डिक्लाइन होगा तो वहां पर एक मैसेज आ जाएगा और आपको इसी स्क्रीन पे टर्मिनेट कर देगा. दिस स्क्रीन इज द लास्ट स्क्रीन जिनका अप्रूवल नहीं आता है, और जिनका अप्रूवल आता है इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगा. देयर विल बी नेक्स्ट स्क्रीन विच विल बी कमिंग अप इफ इट इज अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल. So if it has been approved, you will come to this screen, which is bank account details screen, electronic statement, yes or no, you want a digital statement, and correspondence address again, where you need the card. If you look here at bank account details, where salary is getting credited, please punch in those details. Primary bank name, branch location, account number. Electronic statements, you require yes, do it yes or no. Correspondence address, residential, here a drop down will come, residential, permanent, wherever you need the card, official, office. And my existing relationship with HSBC is no. So select additional features, then you can just leave this, don't select balance transfer or add-on cards, and you can move on. So after you continue, it will take you to document upload page. So document upload page, I have told you 2-3 things here, that you have to upload the salary slip, you have to upload the bank statement, and if you are going for card statement, upload the card for card statement and the card copy, where 4 things has to be visible: the name, the card number, the expiry date, and the bank logo has to be visible on the card front. And with the card statement, please upload a bank statement where salary is also getting credited. That will fasten up the process of approvals. Otherwise bank will ask you for the bank statement later. In many cases, like 90% cases, bank asks the bank statement in C4C. So after doing this, you will come to complete my VKYC. So it will go to VKYC screen, and then VKYC gets completed. So this is the journey. But suppose on the first screen somebody selects no, eKYC no, then he will be redirected to a different page. I'll take you to that. So in case a journey is dropped in between, suppose a customer is traveling and he says that I'll do it later. So there is a retrieval link which can be shared with you. And from retrieval link, if you log in, it will ask you for PAN number and mobile number, and it will say continue. And then the OTP will be sent to the customer. And wherever he has left, suppose he has left on the employment page, the application will log in from that page and it will get retrieved. So this is the retrieval process. Let's come to in case eKYC is not chosen at first screen. So if eKYC is not chosen, so then the process gets lengthier, as I told you earlier also. So you will be redirected to Aadhaar screen at the later stage. I'll tell you what stage it gets redirected. So after income upload, if you have not done the eKYC earlier, it will take you to the Aadhaar page from here. From here onwards, you will go to Aadhaar page, and then you will have to download Aadhaar. You will have to put in the Aadhaar number. You will have to put in the OTP. After you put in the OTP, आपको ऑफलाइन eKYC यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा. इफ यहाँ से ऑफलाइन जो eKYC डाउनलोड होता है वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है. यहाँ पे एक शेयर कोड होता है 1 2 3 4, आप सेलेक्ट कर लीजिए. ये शेयर कोड आपको बाद में भी एंटर करना पड़ेगा. बैंक विल आस्क यू. ये डाउनलोड होने के बाद आपका ये स्क्रीन आता है. यहाँ पर आपको जिप फाइल अपलोड करनी होती है, और शेयर कोड जो आपने उस टाइम पर डाउनलोड के टाइम पर आपने डाला था 1 2 3 4, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा. एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आधार अपलोड हो जाएगा, और आधार अपलोड होने के बाद आपका ये VKYC स्क्रीन पे आपको तब लेकर आएगा. तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप eKYC करें, इस प्रोसेस में ना फंसें. यहाँ पर कस्टमर्स कर नहीं पाते हैं,
और प्रॉब्लम होती है. सो इट्स बेटर कि आप ई केवाईसी स्क्रीन पर ही ई केवाईसी कर लें, तो आधार का ऑथेंटिकेशन ओटीपी के थ्रू हो जाता है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ वी केवाईसी. सो जब वी केवाईसी हो तो पीछे से कोई नॉइज ना हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, कैमरा प्रॉपर हो. ये दो तीन चीजें हैं. प्लेन बैकग्राउंड वॉल के अगेंस्ट रहेंगे तो बेटर रहेगा. ज्यादा नॉइज, लोग मूव कर रहे होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होता है. वो आपको बोलेगा एजेंट, एचएसबीसी का एजेंट जो वी केवाईसी कर रहा है वो आपको बोलेगा आप एक शांत जगह पे बैठिए, क्योंकि उनको डिटेल्स वेरीफाई करना होता है. ही हैज टू वेरीफाई द डिटेल्स. सो कुछ चेक पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट टाइम राइट, आई वाज सेइंग कि फर्स्ट टाइम राइट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज द ईमेल आईडी व्हाट यू आर फिलिंग. द सेकंड थिंग यू हैव टू put is the company name correct. So these two things, check points, you have to take care of that. And third is put the address proper so that the card is delivered at the proper address. Sometimes we have seen the addresses are filled wrong and the doesn't get delivered. So this is a sample salary slip. You need to check properly all the salary components are there or not. And fill the company name has to be filled in accordance to this only. Some do's and don'ts. If you have a tampered PAN card, then definitely it is a problem. For PAN card, I would like to say that e-PAN card is also valid, but it has to be downloaded from the proper site, and it has to be, the name doesn't have to change. The name as you have downloaded, it has to be uploaded like that. So please ensure that if physical PAN card is there, then it's great. If it is not there, then e-PAN card is also valid. And both front and back copy can be asked by the agent. They can look at it. Hazy or blurred photograph should not be there on the PAN card. As I was telling about residence address, and the address is what you are filling. So please ensure the address is filled in proper with proper landmark. Otherwise, it will have issues. So this is last slide, basically not last, but towards the end. So this is how you have to get the card activated. I believe you all are selling a HSBC card. So there are certain things wherein you can tell the customer after receiving the card, they can either download a mobile app, and they can, after downloading the mobile app, they can register themselves through that app, and they can activate the PIN and they can start using the card. So activation of the card is very important. As I told you, after activation only the vouchers are valid. In 30 days, he activates the card and spends on the card. Then the vouchers will come. So he can call up the phone banking. He or she can call up the phone banking and also to activate the card. So a few questions which I have collated from few of our sessions. If somebody has asked, is there any biometric process in HSBC? So the answer is no. HSBC doesn't have any biometric process. In C4C, bank statement is required. The answer is no, bank statement is not required. But if you put in bank statement, because bank can ask you to put in the bank, 90% cases bank asks for bank statement. That's what is my suggestion, to please upload the bank statement where the salary credit is happening, because bank will check Karza, and if they found that UAN number and all those things are not present, they will ask you for the bank statement. Is UAN number and TAN number mandatory? No, the UAN number and TAN number is not mandatory, but if it is there on the salary slip, then it is great. The processing of the application is faster. Is there any floater card? There is no floater card. Is official email ID mandatory? No, the official ID is not mandatory, but providing the same will have better chances of approval. So these were few queries from the last session. Let me take up your questions which are coming in. We are doing listed company, or so the company, there is no company category as such. You can go in for any company, but the customer has to be salaried and he has to have a proper salary slips and bank statement. So Manav, I have answered your question. Please confirm I proceed with the single name customer. Yeah, you can proceed with a single name customer, not a problem. Till the time his mobile number gets authenticated through Aadhaar authentication, so it can be proceeded. Um, Card to card order process, Girish, yes, card to card can be processed, Girish. Um, Mona, in card to card should be how many years completed? Only 1 year, Mona, it is required for card to card program. Uh, so I can see single name questions coming in.
I have answered that. If you go through C2C, we need to upload salary slip or banking. So in C2C program, C4C program, I would request you to upload the bank statement where salary is getting credited. That is sufficient to bank to process. Uh, Work from home is eligible. Yeah, you can punch in work from home, but distance doesn't matter, but it has to be verified. The bank will verify that. PIN code issues. Yeah, I'll come to PIN code issues. PIN code is office and Aadhaar address. PIN code is both, is also serviceable. Yeah, PIN code has to be serviceable. Otherwise, it will not proceed. So let me take you to the PIN code page. So where you will find the PIN codes. So where here you can see office address. So similarly, residence address will also come on one page. The screen is not available with me, but while you are filling the PIN and postal code here. So once you punch in the postal code here, it will reflect at the bottom that it is not serviceable. It cannot go through. So it's simple. The app will, the HSBC page will itself tell you about the PIN codes. Any other queries? हाँ VKYC लिंक नॉर्मली बैंक आपको भेजता रहता है VKYC लिंक एंड मेजर फर्स्ट VKYC लिंक इज वैलिड फॉर 3 days एंड आफ्टर दैट इट एक्सपायर्स एंड आप ले सकते हैं VKYC लिंक फिर एक ही दिन के लिए वैलिड होता है 1 day it is valid the VKYC link is there no credit card then customer can apply first time yes customer can apply if he is a salaried अगर customer salaried है तो he can apply for the first time also no CIBIL also it's he can apply and if he's working with cat B companies there is no listing as such but if he's salaried and working with a cat B company then definitely the cards get issued uh, card for card, people are asking how to process card for. Girish, I have already explained you. For card, where the document upload page comes. So here you have to upload card for card statement. Suppose I am using an Amex card. So Amex card statement I will upload. I will upload my Amex card copy, wherein a card number is reflecting, expiry date is reflecting, my name is reflecting, and Amex logo is reflecting. These four things are mandatory. Uh, you can put the backside of the card, you cut the CVV, and you can just upload that document. So these two documents are primarily required. Bank can ask you additional documents like the salary credit where it is happening in the bank statement bank can ask you. So there are two email IDs which can be given by your relationship manager who's handling your relationship where if bank will send you a mail, so on that mail you can reply and otherwise you can give the customer those two email IDs and tell them to send the bank statement or anything if it comes in reworked way, if it comes in curing, if bank is saying that these documents are required and that can be uh, validated from the MIS which you receive from us. Any other questions? Arya Technology Consultancy, I have answered your question. I think so. I'm done with all the questions. I cannot see any more questions. Anybody -1 score में कर सकते हैं क्या? So Divya, if he is salaried customer again and he is fulfilling the criteria of 33,000 and above, अगर 33,000 से ऊपर सैलरी आ रही है उसकी और वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है एज पर बैंक, तो आप -1 मतलब जो सिबिल नहीं है जिनका, जो उनका भी आप कर सकते हैं प्रोसेस। आप बैंक के ऊपर है, अप्रूव होगा डिक्लाइन होगा, वो हम नहीं बता सकते, बैंक का अपना रूल इंजन है, बट आप एज पर क्राइटेरिया 33,000 सैलरी आ रही है, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप आपने अपलोड करा है, तो दैट एप्लीकेशन विल गो थ्रू, कर सकते हैं। दिव्या, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सिंगल नेम कस्टमर आप कर सकते हैं, अगर वो वैलिडेट हो जाएगा, आधार वैलिडेशन थ्रू हो जाता है तो आप कर सकते हैं। सर जी, एक्सिस बैंक में सभी फाइल रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो एक्सिस बैंक क्वेश्चन आई विल टेक इट लेटर। वी आर इन HSBC ट्रेनिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट HSBC का। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, आपको कुछ पूछना है, सो प्लीज आस्क। कस्टमर अप्लाइड द क्रेडिट कार्ड। Girish, I cannot understand your question. Customer applied the credit, the rejected. I don't understand what you are trying to tell.
So if you're saying customer has applied and it got rejected, so it will get rejected. It is a bank policy driven. So bank has their own checkpoints. So as I told you, after this screen, review screen, the bank runs the rule engine. Rule engine means bank will run their own scoring set. And after the score is run, it will say it is approved or declined. So totally depends on the bank. So not every person will get card. It's an unsecured loan product. How many remove the declines? Okay. So Girish, to answer your question, how to, so you have to use the, if you are in a feet on street model, so please talk to the customers who are salaried. Uh, l- Look at the eligibility criteria, what banks ask. Bank is saying 18 to 65. The customer's age should be 18 to 65 and the salary should be 33,000 and above. So if it is 33,000 and above, अगर 33,000 से ऊपर सैलरी है तो आपका कस्टमर एलिजिबल है, आप अप्लाई करिए. Is this a credit card expense treated as loans, secured, unsecured? In case of 90 days, what is lock-in period for customer to get card? Uh, so Shuklakam Praram is asking, is this credit card expenses treated as loan, secured, unsecured? In case of 90 days, what is the lock-in period for customer to get card? So credit card expenses is not treated as, it is basically uh, FOIR is seen. There is a concept called FOIR, fixed obligation to income ratio. What bank looks at fixed obligation. If the expense is very high on the card and he has not paid that amount, then bank will treat it as a kind of loan. And if the payment is irregular, then definitely the card gets declined. Just to answer your question. Uh, Awakening Uma has asked minimum per month income for fresh civil score, and if this is receive around 20 to 25K in cash. No, though cash salaries are not allowed. Please ensure that the salary is getting credited by a proper NEFT RTGS mode by the company account only. Otherwise, it's there's no point putting in that application will get declined. So there is no cash salary. Nobody considers cash as a salary. Okay. Awakening Uma, I have answered you. Thank Thakur ji. Pankaj. Pankaj has asked, is listed company ही apply होगा या non-listed? Non-listed can also apply, Pankaj. So आप non-listed companies को भी apply कर सकते हैं till the time 33,000 का वो salary bracket criteria fulfill कर रहा हो और उसके पास बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा हो और सैलरी स्लिप हो, तो आप वो कर सकते हैं अप्लाई. अप्रूवल डिक्लाइन अगेन एज आई टोल्ड यू वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, बट हमारी तरफ से अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जो आपको मैंने इनिशियल क्राइटेरिया बताया वो आप कर सकते हैं. चांसेस ऑफ अप्रूवल हाई रहता है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है. कार्ड टू कार्ड में ओल्ड कार्ड कितने लिमिट का होना चाहिए? 70,000 का लिमिट होना चाहिए. ओके. और लिमिट के साथ साथ 33,000 सैलरी भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना. सिर्फ कार्ड टू कार्ड स्टेटमेंट लगा देंगे और 33,000 से लेस सैलरी होगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा, वो डिक्लाइन होगा. Fixed obligation to credit card ratio, so directly makes impact on the CIBIL and is Aadhaar. So Shulakam Param has written fixed obligation to credit card ratio is directly impact with CIBIL and is Aadhaar card becoming mandatory. Yeah, it is. You are right on that part. Obviously, fixed obligation to credit card is important factor while decisioning any credit card. A bank will look at that. बैंक देखता है नेट सैलरी काउंट या ग्रॉस सैलरी. नेट सैलरी 33,000 आना चाहिए, अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शंस. सारा डिडक्शन के बाद 33,000 रुपए अकाउंट में आना चाहिए, तभी आप प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं प्रोसेस करेंगे. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? आई बिलीव आई हैव आंसर्ड एनी. किसी का क्वेश्चन अगर रह गया हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें एंड वी कैन टेक इट अप. एचएसबीसी में निगेटिव एरिया भी होगा, वो आपका पिन कोड लेगा ही नहीं. अगर निगेटिव एरिया में होगा तो पंकज दैट विल नॉट गो थ्रू. अगर गो थ्रू हो भी गया तो अंडर राइटिंग लेवल पे डिक्लाइन हो जाता है. वैसे गो थ्रू होता ही नहीं है, आपको वो लेगा ही नहीं बिकॉज पिन कोड लिस्ट दे हैव अकॉर्डिंगली पुट कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है. ओल्ड कार्ड में अवेलेबल लिमिट कितना होना चाहिए? 70,000 एज आई टू 70,000 होना चाहिए ओल्ड कार्ड में. फिर बोलूंगा कार्ड फॉर कार्ड के लिए कि 70,000 लिमिट तो ठीक है, बट 33,000 का सैलरी भी आप लोग प्लीज चेक करें. ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपलोड कर दें सिर्फ कार्ड फॉर कार्ड.
और उसकी सैलरी कम होगी, वैसे भी डिक्लाइन हो जाएगा वो। कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रू कर सकते हैं। नो, नेहा, सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैंने आपको स्क्रीन शो किया था। कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ सर्टेन बैंक्स ही हैं जहां पर आपका कार्ड वैलिड है। सो वो बैंक्स का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पॉलिसी जब मैं बता रहा था तब मैंने ये बताया था कि देर आर फ्यू बैंक्स जहां पर आपका जो वैलिड है वो कार्ड। सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एमेक्स, सिटी, आईडीएफसी, एक्सिस, एचडीएफसी एंड कोटक, दीज आर द बैंक्स। वन लास्ट, please, one last. Can the card EMI be converted into regular loan under recommendation of CAT A, directory company letter? EMI option. See, there is as such there is no feature of EMI option, but banks keeps on sending SMS. Bank SMS भेजता रहता है, आप कस्टमर केयर में फोन कर कर अगर आप एलिजिबल हैं EMI के लिए तो आपको बैंक विल ट्रिगर, बट हर केस में नहीं होता है। इसमें फीचर नहीं है ईएमआई बनवाने का। सो बहुत सारे कार्ड्स में होता है कि इतने स्पेंड्स के ऊपर ईएमआई बनवा सकते हैं, बट आप कस्टमर केयर में एक बार फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। रेसिडेंस वेरिफिकेशन होगा क्या? यस, रेसिडेंस वेरिफिकेशन ट्रिगर होता है इन मेनी केसेस। तो वेरिफिकेशन सारा पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द बैंक, सारे कार्ड्स के लिए होता है वो, तो होगा। कंपनी वेरिफिकेशन इज देयर, गिरीश इज आस्किंग, कंपनी वेरिफिकेशन इज देयर। या बैंक कुछ भी वेरीफाई कर सकता है, बैंक को अगर लगेगा तो कंपनी भी वेरीफाई करवाते हैं वो। तो दैट इज देयर। फील्ड वेरिफिकेशन होता ही होता है। सो बैंक इज थर्ड पार्टी एजेंसीज करती हैं बैंक के लिए, एंड दैट इज एप्लीकेबल। If Bhumika has asked if we applied on the basics of card, for card also bank will ask for payslip and bank statement. हाँ भूमिका, आपको बैंक मांग सकता है। अगर बैंक, एक सॉफ्टवेयर है कर्जा जहाँ बैंक चेक करता है कि आपका यूएएन नंबर है और कंपनी से सैलरी आ रही है उनके पास, दे चेक इट। अगर वहां नहीं मिलेगा आपका डिटेल तो दे विल आस्क यू फॉर द बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, कुछ भी मांग सकते हैं आपसे, और वो आपको ईमेल करना पड़ेगा। और ईमेल आईडी इसलिए मैं बोल रहा था कि सही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में आप भरते हैं, क्योंकि आपका ईमेल आईडी अगर गलत हुआ तो फिर नहीं जाता है। कस्टमर अगर आधार एड्रेस पर नहीं रहता हो तो हम अदर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप वहाँ रेसिडेंस का एड्रेस आता है, परमानेंट एड्रेस आप सेलेक्ट करके आप फिल करते हैं, जो एड्रेस आप फिल करेंगे अकॉर्डिंगली उसी एड्रेस पे आपका कार्ड डिलीवर होगा। पंकज has asked HSBC अकाउंट, CSA अकाउंट, कैन आई? तो जो HSBC के ETB कस्टमर्स हैं, खुद के कस्टमर्स हैं, उनको हम नहीं टच करते हैं। तो प्लीज डोंट सोर्स दोज कस्टमर्स, प्लीज लीव दोज केसेस, आप वो छोड़ सकते हैं। पवन, लिस्ट एरिया पिन कोड भी होना चाहिए। हाँ, सो लिस्ट, पिन कोड लिस्ट इज देयर। अगर आपको चाहिए तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से प्लीज टच बेस कर लें, आपको मिल जाएगा। केवाईसी करने, पवन, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लक्ष्मी has asked, केवाईसी करने का पीडीएफ भेजिए सर। केवाईसी करने का पीडीएफ, केवाईसी सिंपल, ई केवाईसी कर रही हैं आप, वो आधार ऑथेंटिकेशन होता है लक्ष्मी। इट इज वेरी इजी टू जस्ट पुट इन द आधार नंबर, गेट एन ओटीपी। वंस यू डू दैट इट विल गो थ्रू। हाँ, दे विल आस्क भूमिका, दे विल आस्क फॉर सैलरी चेक कि सैलरी क्रेडिट हो रही है कि नहीं। बैंक स्टेटमेंट अगर आप दे देंगे तो कार्ड फॉर कार्ड प्रोग्राम में चला जाएगा वो, अगर बैंक ने मांगा तो। अगर उनको कर्जा में डिटेल्स नहीं मिला, उनका सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं मिला तो। कार्ड रेसिडेंस अगर डिलीवर होगा फिर भी वेरिफिकेशन होगी। सो अगर आपका आधार एड्रेस वैलिड है एंड इफ यू आर एट द सेम एड्रेस विद आधार पर है तो वेरिफिकेशन कई बार ट्रिगर नहीं होती, वो बैंक के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। हम नहीं बता सकते कि क्या वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एड्रेस मैच कर रहा है आधार से, आपने ऑथेंटिकेट किया है, तो बैंक वेव ऑफ कर सकता है। बट मैं यहाँ कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर, बैंक के ऊपर है वो। टोटली बैंक विल डू कि एफआई करना है या नहीं करना है, फील्ड वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है। सैलरी अगर लेस होगा, ये मैंने पहले भी आंसर किया था। इफ C4C में सैलरी अगर 33,000 से लेस है तो प्लीज डोंट सोर्स दैट कस्टमर, वो डिक्लाइन हो जाएगा केस, क्योंकि बैंक का पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया 33,000 सैलरी। सो इफ 33,000 सैलरी इज नॉट कमिंग देन आपका वो वैलिड नहीं होगा। हाउ मेनी डेज रिसीव द क्रेडिट कार्ड? सो गिरीश, सेल क्रेडिट कार्ड आप रिसीव आफ्टर द अप्रूवल मैसेज कम्स, इट विल टेक अ वीक्स टाइम।
5 से 6 दिन में आ जाता है। मैं खुद HSBC का कार्ड यूज करता हूँ, तो 5-6 डेज में आ गया था मेरे पास। Current address proof required? Not really. Current address proof is not required as such. If you have authenticated your Aadhaar and put it, तो अगर एड्रेस प्रूफ है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आधार वैलिडेशन के बाद वट एवर एड्रेस यू हैव फिल्ड उस पर वेरिफिकेशन होगा इन दिस केस, और वेरिफिकेशन होने के बाद दिव्या देन तभी कार्ड डलता है। ठीक है guys, I believe I have answered all the questions, so this can go on, and I will end the session. Thank you for joining and thank you for listening, and keep on asking the questions from your relationship managers, and any queries, please do park it to us. We will be conducting such sessions frequently so that आप लोगों की queries address हो पाए, and uh, happy selling. That's it from my side. Just a second, I'll take one more last question. Lifetime free card है. So Pankaj, I told you there are two cards. One is lifetime free, जो Visa Platinum card है वो lifetime free है. The second variant, which is cashback credit card, is rupees 999. First year fee, and second year is again 999 for HSBC cashback credit card. That 999 second year gets waived off if you are spending 2 lakh rupees on that card. Cashback credit card. The first variant is lifetime fee, which is entry level variant. Visa Platinum card it is called. The second card is cashback card. Cashback card is chargeable. First card, Visa Platinum, is lifetime free. ठीक है guys, I thank you for your time and happy selling. Bye.